Okay, should we start? I think Yes, Rabia, G. Ji. yes. Yeah, I think so. So, How does this? Ji, go ahead. Go ahead. Sorry. जी, um, so good afternoon, and I welcome my regular feature of Center for Law and Security. I am Research Associate Rabia Anwaar at the Center and will be hosting you throughout the session today. So, given Pakistan's current political landscape, the social media regulation has been observed under regular disruptions from conducting political campaigns to its halt during elections, and then we can also see its halt during in post-election times. Like currently, Twitter is banned in Pakistan. So it affects overall dynamics of Pakistani politics. And in such a scenario, CLAS felt a need to host a webinar session titled Regulation of Social Media in Pakistan's Political Landscape and its way forward, which is the most important thing in this session. So to have an insightful discussion on the subject matter, we have two distinguished guests, Barrister Yasser Latif Hamdani, who have litigated internet freedom in Pakistan, and Mr. Rehman Azhar, anchor person of Express News. I welcome both of you on board, sir. Thank you for joining us. Thank you for having me. Thank you. So, sir, I would like to begin the session with you, sir. Sir, how do you think that what could be the political reasons in Pakistan? Do you think are these a part of necessity, or what could be the reasons behind it? Okay, Rabia, I think you're breaking up. Were you asking me the question and I couldn't hear the question? Sir, I am I think audible? she asked you. Okay. Yeah. Okay, and can you That part repeat I the heard. question? Sorry, can you Sir, am repeat I the audible to question? you now? Yes, you are. You Ji, are. sure. Okay. So, sir, I was asking what, in your opinion, what could be the possible reasons or motivations behind the disruptions of social media that it has been undergoing currently? Are these a part of necessity, or under what frameworks it had happened? Right. So this is very interesting. First of all, we can't derogate fundamental rights, and I'll come to fundamental rights in a minute, where we cannot derogate fundamental rights simply because or simply citing necessity. I mean, it's very clear, and regardless of which way, one falls on the political divide, the entire issue has been one which is politically motivated. I mean, you know, social media, especially Twitter or the X as it is called now, or even Facebook and other platforms, or especially X, Yes. these have been used, and this is a new kind of political mobilization and political organization that happens through social media. Now, this is what one particular party was doing, and one can disagree with that party, as I do. However, the fact of the matter is that this is one non-violent political protest that is taking place. Now, to say that, there was a necessity, there isn't, because what you see essentially is that so it comes down to, so what would be the necessity unless there was speech that was inciting violence. Now arguably, if somebody was inciting violence, something like the May 9 thing, then that would be a necessity that would have to be controlled. But the tools for, or the mechanism to redress such an issue has to be legal. Right now, in my opinion, there is no framework to do what is currently being done to X or Twitter, or other social media platforms as well, but mostly X. There is no framework, precisely because the Pakistani constitution gives certain fundamental rights, foremost amongst them Article 19 of the constitution. Article 19 being freedom of expression and speech, and it is Right, sir. there are clawbacks, Right. that are there that have been built into that fundamental right.
But as long as those clawbacks are acted upon by legislation, now there isn't any legislation. If you think about it, uh, even the government has disowned the ban. It said, no, we are not the ones responsible. I mean, that's what they've said in court. Unless there's been a new development today, which I haven't followed. But as far as, the case in Islamabad High Court is concerned, and, even in Sindh High Court, the government's taken a position that they have nothing to do with this ban. And that is because um, Section 37 of the Prevention of Electronic Crimes Act, which is the statute that would most which would be the closest that could apply to this situation, talks about there are certain safeguards that are given. None of those were taken into account. We know that there is disruption. PTA hasn't announced. PTA is the regulatory body in this, and they haven't come out and announced or given a reasoned decision, which can then be challenged in court. So all of this. So in so far as your question, I digress. But in so far as your question is concerned, I don't feel that this is a question of necessity or that it could be justified as necessity. It's not. You can't justify it on the basis of necessity. What you can say, and what essentially what is happening right now is that the government or whoever is doing this has taken away a very important tool and a very important avenue of political expression. So yeah, that's my view on this. Yasser, what are your views on, like, because ऐसा लगता है somewhere the government thinks that this is the only option that they have. So do you think that this is the only option they've got in this scenario, or the scenario that they are Right. facing? I think as far as the question is option for what? I mean, if XYZ is saying something on social media, now I speak as someone who's a freedom of speech absolutist, but I recognize that there are certain limitations on freedom of expression and speech in the Pakistani constitution as well. Now, what essentially are these people saying? If they are carrying out political protests through through a medium, they're not actually going ahead and doing something that is, so contrary to the idea, in terms of, so if they were trying to subvert the constitution, for example, if they were trying to overthrow the government, none of that is happening. So, option for what? I don't see any reason for the ban or sort of, and that's where the regulation has to strike that fine balance. I mean, not only is Pakistan, not only are these constitution fundamental rights in Pakistan. Right. I mean, the government, when it talks about options, it has to understand that fundamental rights cannot be derogated. If you think about it, Pakistan has also signed the ICCPR. And in ICCPR, there's a clear provision. The restriction, if any, or disruption, if any, has to be reasonable and only for the purpose that it is. Here we have a question of the purpose not being, even so. The purpose itself is inexplicable. In terms of there hasn't been any explanation for why it's been done. They've come to court, they haven't. That is why in terms of option, my sort of counter question to you is options for what? Like curbing dissent? I think dissent should not be curbed, regardless of what one feels about. It's really a question of you can't only believe in an idea of freedom of speech if everyone agrees with you, right? You have to defend those who disagree with you as well, and so that sort of that's the basic principle. Okay. सर रहमान, अगर हम इस चीज को, इन डिस्ट्रप्शंस को खत्म करना चाहें, या अगर हम सोशल मीडिया रेगुलेशन को फ्री पाकिस्तान में रेगुलेट करना चाहें, तो उसके लिए व्हाट कुड बी द बेस्ट प्रैक्टिसेस इन योर ओपिनियन? I think my take would be obviously how, from my experience in media and how media sees these disruptions, and Yasser has very eloquently
told that what the legal side is and how this is basically part of your fundamental rights and it cannot be negotiated. लेकिन इसके अंदर जो है वो जो disruptions हैं, first thing that you need to understand is that no one is giving a reason. मिसाल के तौर पर जो है वो YouTube 2011 में बैन होता है और वहां पर जो है वो एक रीजन थी prima facie, there was a justification, और जो कोर्ट्स हैं या पब्लिक है या मीडिया है वो ये डिबेट कर सकता था कि क्या ये बैन सही है या गलत है. सो नाउ वी डू नॉट हैव एनी रीजन व्हाटसोएवर. द कोर्ट्स हैव बीन आस्किंग कि ये क्यों हुआ है और किस लिए हुआ है. नो वन इज गिविंग ए रीजन. तो एक तो हमारे जो पब्लिक डिस्कोर्स के अंदर ये जो इस बैन की वजह है उस पर सिर्फ अंदाजे पे बात हो सकती है, एंड अंदाजा किसी हद तक बहुत सारे लोगों का, जिस तरह से यासिर वाज सेइंग, इट सीम्स पॉलिटिकली मोटिवेटेड एट द मोमेंट. उसके अलावा हमारे पास जो है वो कोई रीजन नजर नहीं आती. सो दिस इज वेयर द प्रॉब्लम बिगिंस. हम अपने डिस्कोर्स के अंदर इस बैन को या इस डिस्ट्रप्शन को डिबेट तभी कर सकते हैं जब हमारे पास पता हो कि इस डिस्ट्रप्शन की जो वो वजह क्या है. वजह स्टेटेड वजह नहीं है. वजह के हवाले से हम सिर्फ जो है वो सिर्फ अंदाजे लगा रहे हैं, एंड दैट इज व्हाट is going on right now. And I also feel what Yasser was saying कि ये politically motivated ही लगता है. सेकेंड थिंग, जो स्टेट्स हैं वो ओवरऑल ऑल ओवर द वर्ल्ड नाउ दे आर थिंकिंग कि हाउ टू डील विद दिस सोशल मीडिया और हाउ टू रेगुलेट सोशल मीडिया. हमारे पास कुछ मॉडल दैट यू पॉइंटेड आउट. हमारे पास एक मॉडल जो है वो चाइना का है, जहां पर चाइना ने एक ऑल्टरनेटिव जो है वो लोगों को दिए हुए हैं. दूसरा मॉडल जो है वो हमारे पास सेंट्रल एशियन स्टेट्स का है, जहां पर जो है वो ये सोशल मीडिया वेबसाइट्स जो हैं वो, व्हेन वी रेफर टू सोशल मीडिया, सो जस्ट रिमेंबर इट इज, we are referring to Instagram, TikTok, Facebook, and Twitter, now known as X. So, कुछ स्टेट्स ने इनको आउटराइटली जो है वो बैन किया हुआ है. फिर कुछ स्टेट्स जो वेस्टर्न है वहां पर जो है वो दे आर फ्री फॉर ऑल. देयर इज नो डिस्ट्रप्शन दैट वी हियर ऑफ, एंड देन देयर इज नो आउटेजेस एज वेल, जो कि हमें पाकिस्तान के अंदर जो है वो नजर आती हैं. पाकिस्तान ना तो जो है वो कोई ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म है लोगों के पास, ना यहाँ पर आउटराइटली बैन है, और ना यहाँ पर जो है वो पूरी तरह से अभी आजकल पाकिस्तान में पूरी तरह से जो है वो इनको जो है वो इस्तेमाल करने की इजाजत है. सो माय पॉइंट इज कि यू नीड टू मेक द रूल्स ऑफ द गेम क्लियर. या तो आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज करें, या फिर आप लोगों को ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म दें, या फिर आप जो है वो लोगों को ये बताएं और उसके रीजन बताएं कि जी कि ये वेबसाइट जो है वो आप यूज नहीं कर सकते. द प्रॉब्लम हियर इज व्हाई दिस इज ऑल दिस सच अ कंफ्यूजन. द प्रॉब्लम हियर इज दैट वी डू नॉट हैव द रूल्स ऑफ द गेम. आपने आपके पास जो है वो जो प्लेग्राउंड है, या जिन रूल्स के तहत आपकी जो है वो ये पूरी रेगुलेशन होनी है. रेगुलेशन तो देखें तभी होगी ना जब आपके पास पता होगा कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते. यहाँ पर तो यही क्लैरिटी नहीं है कि व्हाट वी कैन डू एंड व्हाट वी कैन नॉट डू. तो आप लोगों से या आप बाकी डिस्कोर्स के अंदर ये किस तरह से डिबेट कर सकते हैं कि क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए. सो दिस इज माय सेकेंड पॉइंट, के ना तो यहाँ पर जो है वो रूल्स ऑफ गेम क्लियर है, ना यहाँ पर जो है वो रीजन बताई जा रही है कि जिसपे पब्लिक डिस्कोर्स के अंदर इस बात के ऊपर जो है वो डिबेट हो सके कि वेदर दिस इज राइट और रॉन्ग. तो देन देयर कैन नॉट बी एनी डिबेट ऑन दिस, एंड दिस इज व्हाट स्टेट्स और एटलीस्ट पाकिस्तान के अंदर जो है वो यही चीज हो रही है कि एक इनफॉर्मल सा जो है वो एक आउट ऑफ द बॉक्स जो है वो जाकर जो है वो एक सोल्यूशन जो है वो देखने की कोशिश की जा रही है कि हाँ ठीक है, फिर इसको जो है वो बंद कर दिया जाता है. लेकिन आई थिंक दिस इज अ टेम्पररी फिक्स. यू कैन नॉट हैंडल थिंग्स. ये आप 1 महीना कर सकते हैं, 20 दिन कर सकते हैं, 25 दिन कर सकते हैं, 2 महीने कर सकते हैं, लेकिन यू नीड टू डिटर्मिन द वे फॉरवर्ड. आपको आगे का रास्ता जो है वो देखना है कि आपने अगर इन चीजों को वाकई, अगर स्टेट ये समझती है कि इनको रेगुलेट होना है, तो किस तरह से रेगुलेट करना है. Whether you're going to give an alternative platform, whether you're going to give these platforms complete freedom, या फिर आपके पास जो है वो कोई और रास्ता है. और यही बात मैं यासिर से उस वक्त भी पूछ रहा था कि स्टेट अगर इफ इट फील्स द नीड किसी भी वजह से, विदाउट गोइंग इनटू द डिबेट, तो क्या स्टेट्स के पास कोई जो है वो मॉडल है या नहीं है. जो बेस्ट प्रैक्टिसेस का हम वर्ड यूज करते हैं वो मेरे ख्याल है दे आर नॉट बेस्ट प्रैक्टिसेस पर से, लेकिन
ऐसा लगता है कि दिस इज नॉट जस्ट आवर प्रॉब्लम, सिर्फ पाकिस्तान के सामने ये डायलेमा नहीं है, बल्कि और भी बहुत सारे जो कंट्रीज हैं वो भी इन चीजों को जो वो देख रहे हैं, और वो भी हमारी तरह ही कंफ्यूज हैं कि अब इन चीजों का करना क्या। Right. तो सर ऐसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि सर ये जो बैलेंस हम मेंटेन कर सकते हैं बिटवीन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड द नीड फॉर रेगुलेशन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, मतलब वो बैलेंस कैसे अचीव कर सकते हैं हम? क्योंकि सोशल जी मीडिया देख प्लेटफॉर्म्स पे हमने देखा है समटाइम्स कुछ ऐसा कंटेंट भी जनरेट होता है थ्रू बाय पब्लिक जो कि सोशल डिस्कोहेजन या उसकी ऐसी चीजों की तरफ लेके जाता है। सो वो बैलेंस हम कैसे अचीव कर सकते हैं? देखिए, किसी भी जगह पे व्हेन यू टॉकिंग अबाउट रेगुलेशन, उसमें आपने ऑब्वियसली उसको किसी पैराए में लाना है, और हमारे आइन के अंदर गुंजाइश मौजूद है रेगुलेट करने की। देर आर क्लॉ बैक्स, मैंने जैसे जिनका पहले भी जिक्र किया था। लेकिन आप ये देखिए कि जहाँ जहाँ कोई आइन जो है वो आज़ादी राय, सॉरी, इजहार राय की आज़ादी का फंडामेंटल राइट देता है, यानी कि फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच, then that becomes it takes a legal life of its own. अगर आज़ादी राय की आज़ादी जो है, इजहार विद फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है, अगर उसकी वो है, तो फिर एक चीज होती है, कॉन्सेप्ट होता है लॉ के अंदर विच इज कॉल्ड प्रायर रिस्ट्रेंट। अब प्रायर रिस्ट्रेंट जो है, मैं आप उसको इसका बताऊं कि पहले से आप किसी के ऊपर कदगन नहीं लगा सकते। उसका तरीका ये होता है रेगुलेट करने का कि इफ आई एम सेइंग समथिंग इंसाइटफुल, you know, yes, I go on Twitter, I say something insightful, then take legal action against me. The laws should then regulate by prescribing whatever penalties that there are. ठीक है जी। अब हमारे पास तो एक्सटेंसिव लॉज हैं पाकिस्तान के अंदर। इफ यू लुक एट और पाकिस्तान पीनल कोड, इट्स एक्सट्रीमली डिटेल्ड एंड वी कवर्ड एवरी पार्ट ऑफ इट। कई जगहों पे तो हम बहुत एक्सेसिव हैं। तो उस चीज को सामने रखते हुए, इफ देर आर पीपल, इफ देर इज फेक न्यूज फॉर एग्जाम्पल, ये एक बहुत बड़ा मसला जो आजकल उठाया जाता है फेक न्यूज का। फेक न्यूज इज अ बिग प्रॉब्लम, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। उसको रेगुलेट होना चाहिए, उस चीज को होना चाहिए, लेकिन उसका तरीका क्या होना चाहिए? उसका तरीका ये है कि देखिए, आइन कहता है कि देयर कैन बी देयर मे बी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय लॉ। दैट्स द इम्पोज्ड बाय लॉ। और वो उसके अंदर फिर जो कदगने हैं वो बताता है कि क्या क्या हो सकता है। तो वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आप लगाएं, आप लोगों को करने दें। यानी कि ट्विटर को आप बैन ना करें। आई थिंक वो तो इसी तरह है कि आप किसी की जबान पे ताला लगा दें। ठीक है, यूट्यूब को आप ऐसे ही है बैन करना कि अगर वो एक वीडियो आई थी तो आपने यूट्यूब को बैन कर दिया। इसी तरह है कि अगर एक लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारी किताबें, उनमें से एक गलत किताब है तो आप सारी लाइब्रेरी को ताला लगा दें। दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स। what you need essentially is that you leave it free for all and then regulate speech afterwards by punishing. So for example, hate speech एक ऐसी चीज है, हेट स्पीच जो है वो रेगुलेट होनी चाहिए। और हमारे मुल्क में तो हेट स्पीच बहुत ही ज्यादा है। इफ यू थिंक अबाउट इट, द हेट स्पीच जो है, ऑनलाइन हेट स्पीच जो है, इट्स समथिंग दैट इज अ मैसिव प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तानी सोसाइटी। तो उस चीज के लिए लॉज होने चाहिए जो हेट स्पीच को रेगुलेट करें। बल्कि मैं ये कहूंगा कि ये एक चीज ऐसी, इसी तरह फेक न्यूज पे लॉ ले आए, लेकिन उसको फिर उस आइन के पैराए में रखें, within those four corners of Article 19 of the Constitution. And let me also add that Article 19 के अलावा, when you talk about social media, now we concentrated on Article 19, but there are handful of fundamental rights that are affected. उसमें से एक Article 19A है। आप ये देखिए कि आपने अगर मोटरवे पे सफर करना हो लाहौर से इस्लामाबाद या इस्लामाबाद से लाहौर या जहां भी जा रहे हैं आपने, और फॉग के सीजन में, तो आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो मोटरवे का ट्विटर हैंडल है। वहां से आपको पता चलता है कि फॉग कहाँ है क्या नहीं है। दिस इज एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इज अ फंडामेंटल राइट अंडर द पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप इस पे इसलिए भी कदगन नहीं लगा सकते क्योंकि ये सिर्फ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात नहीं है, फ्रीडम ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन की भी बात है। ऑल ऑफ दैट is all part of our fundamental, the fundamental basic structure of the Constitution says that fundamental rights are above
all sort of other considerations. तो इन चीजों को सामने रखते हुए आई थिंक जो आप कह रही हैं रेगुलेशन की जो बात कर रही हैं, वो रेगुलेशन ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए जो जो इन चीजों को पाकिस्तान की आईनी जो ऑब्लिगेशंस हैं, जो आइन से जिसके साथ हम हैं, इसके अलावा द इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस दैट पाकिस्तान हैज, एंड देयर आर सेवरल इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस जो इससे वायलेट होती हैं. तो रेगुलेशन जो है, देयर शुड बी रेगुलेशन ऑफ fake news, but then that law should be reasonable. That is what I would. So this requires concerted legislative action. ये असेंबलियां जो हमने बिठाई हुई हैं, इनको यही काम करने हैं. They have to come up with laws that actually make sense and are rational. वो rational law making जो है वो इसको कर्ब कर सकती है. जो मसाइल हैं जिनको मसला समझा जाता है, उनको कर्ब करने के लिए there are ways and means. Those ways and means are not explored. इसके आर्बिट्री किस्म का आपने जो है बैन लगा दें, उसको ऐसा बैन है, इतना एम्बैरेसिंग है कि नो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट इज इवन ओनिंग अप टू इट. सो या, एंड दैट्स आई थिंक right. Thank you so much, sir. Sir, last question from both of you. Sir, हम social media platforms को किस तरीके से ऐसे यूज कर सकते हैं कि ये एक inclusive और participatory politics को promote करे? Yasser, you want to go ahead first? Sure. I'll देखिए, when you talk about social media और उसके ऊपर, I think participatory और जो आपने जो कहा कि inclusive किस्म की जो understanding होती है, वो उसी तरह है जैसे एक जमहूरियत inclusive और participatory होती है. आप किसी पे कदगन नहीं लगाते. ठीक है जी. दिस इज वाई द आइडिया इज कि अगर मैं जो हूँ ट्विटर इस्तेमाल कर रहा हूँ या फेसबुक इस्तेमाल कर रहा हूँ और मैं ये नहीं कह रहा कि जाओ और उसको कत्ल कर दो या जाओ और वहां आग लगा दो, तो फिर मेरे उस राइट के ऊपर कोई कदर नहीं होनी चाहिए. उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि आपकी सोसाइटी के अंदर जितने व्यूज हैं वो एक्सप्रेस होंगे. नाउ अगर वो जो है इस तरह है, बॉर्डर कर रहे हैं हेट स्पीच पे, या वो है उस चीज को आप बिल्कुल जैसे मैंने पहले आपको पिछले सवाल के जवाब में कहा कि देयर आर वेज एंड मीन्स टू इट लेजिस्लेटिवली. तो एज लॉन्ग एज इफ यू कैन इंश्योर, सी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच का एक बड़ा वो होता है कि जी इट्स अ फ्री मार्केट ऑफ आइडियाज. ठीक है जी. आप लोगों को करने दें, बहस करने दें, एक दूसरे के साथ वो करें, उससे ही पार्टिसिपेशन होगी, उसी से जो है आपकी एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट होगी. देखिए, आपने इस वक्त हमारे यहाँ ऐसी भी, और ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है कि हमारे मुल्क में ऐसी भी कम्युनिटीज हैं जिनको अपना रिलीजियस राइट एक्सप्रेस करने के लिए भी जो है उनको जेल कर दिया जाता है. ठीक है. ये अब आप फॉलो कर ही रहे होंगे जो चीफ जस्टिस साहब का जो वाकया हुआ था पिछले महीने और सारा कुछ वो उसी लिहाज से था. वो ये कह रहे थे कि एक्सप्रेशन जो है वो रिलीजियस एक्सप्रेशन उनका राइट है, वो उनसे ना ले और उसके ऊपर उनके खिलाफ जो होगी. तो ये हमारी, तो कहने का मकसद ये है कि हमारा एक सोसाइटल एटीट्यूड है जिसको चेंज होने की जरूरत है फॉर द सोसाइटी टू एक्चुअली बिकम इंक्लूसिव. और वही फिर रिफ्लेक्ट होगा. जितनी सोसाइटी इंक्लूसिव होगी, डेमोक्रेटिक होगी, पार्टिसिपेटोरी होगी, उतनी ज्यादा वो जो है आपके सोशल मीडिया और आपकी, क्योंकि सोशल मीडिया इज द रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी इन माय ओपिनियन. जी सर. सर रहमान, आपका क्या कहना है इस पर? मेरा ख्याल है इसमें एक चीज, तो पहले जो स्टेट के हवाले से बात हो रही थी कि स्टेट्स जो है वो ये डिलिबरेट कर रही हैं या उनके पास आगे का क्या रास्ता होना चाहिए. हमारे यहाँ एक चीज हो रही है कि हमारी जो स्टेट है इट फील्स ओवरवेल्म्ड बाय द यूज ऑफ सोशल मीडिया, और खास तौर पर जो है वो पॉलिटिकल एरिना के अंदर. और उसकी कुछ बड़ी बेसिक वजह जो है वो नजर आती है. आई थिंक स्टेट्स ऑलवेज डू कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कि हमें किस चीज का कितना फायदा है सोशल मीडिया से, हमें क्या पॉलिटिकली को फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा. सो दिस इज प्रॉबली कहीं ना कहीं पर जो है वो हर स्टेट की जो अप्रोच है, नॉट द वेस्टर्न स्टेट्स के जहां पर ये चीजें जो है वो गिवन होती हैं, बट ये जो ईस्टर्न है, जैसे से चाइना की मैंने बात की, सेंट्रल एशिया की बात की, पाकिस्तान है, गल्फ कंट्रीज हैं, ये सारे के सारे जो है वो अभी ये कहीं ना कहीं पर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इसका जरूर करते हैं कि हमें सोशल मीडिया का फायदा क्या है और हमें सोशल मीडिया का नुकसान क्या है. ऑफ कोर्स लोगों को तो बहुत इसका फायदा है
लेकिन स्टेट्स जो कि आमतौर पर जो वो रिसीविंग एंड पर होती हैं, तो वो ये समझती हैं कि नहीं, इसका हमें फायदा कम है, बल्कि इसका जो है वो नुकसान ज्यादा है। और उसकी कुछ बड़ी बेसिक वजूहत है। एक तो ये कि स्टेट्स के जो सिस्टम्स हैं वो आउटडेटेड होते हैं। दिस इज अ वेरी टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लेटफॉर्म्स, यहाँ पर लोगों की इंक्लूसिविटी ज्यादा है, बहुत तेजी के साथ जो है वो चीजें चेंज होती हैं। टेक्निकली जो है वो स्टेट्स जो है वो कोप नहीं कर सकती वट एवर इज गोइंग ऑन, वट एवर इज टेकिंग प्लेस ऑन सोशल मीडिया, चाहे वो फेक न्यूज हो या फिर जो है वो कोई डिस्कोर्स सेटिंग हो। और वो रेगुलेशन को मुश्किल काम समझती हैं और बैन को जो है वो आसान काम समझते हैं। दिस इज व्हाट वी हैव सीन इन गल्फ कंट्रीज एज वेल। हमने चाइना के अंदर और बाकी जगहों पर भी जो है वो हमने यही देखा है कि वो कहते हैं रेगुलेट करना जो है वो दिस इज वेरी टीडियस जॉब, इट्स अ वेरी जो है वो मुश्किल काम, एंड देन वी वुड रादर जस्ट सिंपली बैन इट। तो ये चीज आपको जो है वो यहाँ पर होती नजर आती है। जो आपने पॉलिटिकल डिस्कोर्स की बात की, देखिए पाकिस्तान में नो डाउट पॉलिटिकल पोलराइजेशन ज्यादा है, और वो ज्यादा इस वजह से भी है कि बिकॉज हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के जो नैरेटिव्स हैं वो एक दूसरे के साथ जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो क्लैश करते हैं। यही वजह है कि वही डिस्कोर्स आपको नजर आता है ऑन सोशल मीडिया एज वेल। ये गल्फ कंट्रीज के अंदर मसला ऐसा नहीं है, चाइना के अंदर ऐसा मसला नहीं है, अमेरिका में किसी हद तक नजर आता है, बट अमेरिका के अंदर पोलराइजेशन, आई मीन पाकिस्तान के साथ उसको कंपेयर जो है वो किया जा सकता है। बट यूरोप के अंदर मोस्टली आपको इतनी पोलराइजेशन जो है वो नहीं मिलती। पाकिस्तान के अंदर जो है वो पोलराइजेशन जो है वो थोड़ी सी मामूल से, जिसको आप कह लें कि वो ज्यादा है। अब दिस इज वेयर द पॉलिटिकल इंक्लूसिविटी कम्स इन। अब आपके पास यहाँ पर दो रास्ते होते हैं, या तो आप जो है वो लोगों को जो है वो करने दें एंड यू वेट फॉर अ टाइम कि जहां पर लोग जो है वो मैच्योर हो जाएं, या आपका जो एक आम शहरी है जो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करता है, वो इतना मैच्योर हो जाए कि वो इन चीजों को खुद समझना जो है वो शुरू कर दे। या फिर दूसरा रास्ता ये है कि आप उसकी जो रेगुलेशन है वहां पर एफर्ट करें। जिस तरह से आप कह रहे थे, यासर बात कर रहे थे कि यू नीड टू मेक लॉज, और फिर लॉ सिर्फ आपने बनाने नहीं है, आपने लॉज की इम्प्लीमेंटेशन भी करवानी है। इम्प्लीमेंटेशन आपकी जुडिशरी ने भी करनी है, आपकी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ने भी करनी है, वहां पर उनको काम करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली हमने उसके लिए जो है वो एक आसान रास्ता उसके बाद हमने ये देखा है कि ना वो हमें लॉज बनाने पड़े, ना हमारी एग्जीक्यूटिव को जो है वो उसको इम्प्लीमेंट करवाना पड़े, ना हमारी जुडिशरी को उसको एजुकेट करना पड़े। हम सिंपल ये करते हैं कि हम जो है वो इसको आउटराइटली जो है वो बैन कर देते हैं। तो ये डिस्ट्रप्शन जो है वो कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। ये शॉर्ट टर्म फिक्सेस जरूर हो सकते हैं, लेकिन आपको बैठकर सबको मिलाकर आपको इसका कोई हल निकालना होगा, एक वे फॉरवर्ड जो है वो उसको डिटरमिन करना होगा। लाइक आई सेड, रूल्स ऑफ गेम्स जो हैं वो आप उनसे हट नहीं सकते। आपको अगर कॉन्स्टिट्यूशन आपको राइट देता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का राइट देता है, देन एवरी टाइम यू गो टू कोर्ट यू विल गेट द सेम डिसीजन। स्टॉप एक्सपेक्टिंग कि आपको जो है वो वहां से जो है वो कोई जो है वो और डिसीजन जो है वो मिलेगी। तो ये कम से कम जो है वो इन चीजों को थोड़ा सा जरा ओपन करें, इन चीजों के ऊपर बात करें कि क्या इस मुल्क को जरूरत है, आगे का रास्ता जो है वो क्या होना चाहिए। और आई थिंक विदाउट दैट डिस्कोर्स इट इज नॉट पॉसिबल कि आप पर्सनल विम्स के ऊपर जो है वो आप डिसाइड करें कि अब एक मॉर्निंग में जो है एक बंदे ने सोचा कि नहीं सोशल मीडिया ठीक नहीं है, तो जो है वो ये सोशल मीडिया जो है वो बंद हो गया। एक और आए तो उन्होंने कहा कि नहीं सोशल मीडिया तो होना चाहिए, तो उस दिन जो है वो सोशल मीडिया जो है वो चल पड़ा। सो आई डोंट थिंक के जो रियासत के काम होते हैं या जो स्टेट्स होती हैं वो इस तरह से ऑपरेट करती हैं। यू नीड टू डिटरमिन वंस एंड फॉर ऑल कि आपने आगे क्या करना है। Indeed, it was a very thoughtful discussion. And on behalf of Center for Law and Security, I thank both of you. Thank you very much, sir. And we hope to collaborate थैंक यू with you यासिर। for our future plans. Thank Thank you you, so sir much. Yasser, and thank you, sir Rehman. Allah Hafiz. Khuda Hafiz ji. Thank you so much.